request the government to reinstate the rate. Thank you. Question number 136. 136, Fauzia Khan. Sir, question number 136. Minister. Table the House. Supplementary, please. Where is the deputy chairman? सर, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसका जो रिप्लाई आपने मुझे दिया है, इसमें कहा है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस टू ऑल विलिंग अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो क्या विलिंग हाउस होल्ड्स के लिए अगर है तो अनविलिंग जो है उनको नहीं मिलेगा? क्योंकि बहुत बड़ा प्रमाण है जहां लोग आंकड़े डालकर बिजली के कनेक्शंस लेते हैं इलीगली सर, और जिन घरों तक ग्रिड लाइंस पहुंचना फीजिबल नहीं है उनके लिए क्या प्रावधान है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। Thank you. अध्यक्ष महोदय, हम लोग कनेक्शन तो उन्हीं को दे सकते हैं जो कि कनेक्शन लेने के लिए इच्छुक हो। माननीय सदस्य का यह कहना है कि कुछ लोग जो चोरी कर रहे हैं वो नहीं लेना चाहेंगे, ये बिल्कुल सत्य है और इसके लिए हम लोगों ने उपाय भी किया है। हम लोगों ने राज्यों को ये परामर्श दिया है कि जहां अधिक चोरी हो रही है वहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। एरियल बंच केबल्स आता है जिसमें कि हुकिंग संभव नहीं है। हमने कहा कि फंडिंग हम करते हैं, आप वहाँ एरियल बंच केबल्स लगा दें तो चोरी बंद हो जाएगी। बहुत सारे राज्यों में जहाँ पर ये हो रहा था उन्होंने एरियल बंच केबल्स लगाए या हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाए तो चोरी बंद हो गई। तो सभी घर सामने आए कि हमको भी आप विद्युत कनेक्शन दे दीजिए। तो पहला तो सप्लीमेंट्री माननीय सदस्य का यह था। दूसरा सप्लीमेंट्री था ऐसे घर को कैसे हम लोग कनेक्शन देते हैं जहाँ पर कि ग्रिड पहुँचाना ये संभव नहीं है या बहुत दूर है, तो उनको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से कनेक्शन देते हैं और इसके लिए भी हमारा प्रावधान था और इसके लिए भी हम लोगों ने कनेक्शन दिया। जहाँ जहाँ जरूरत था वहाँ हमने कनेक्शन दिया। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर फौजी। मंत्री महोदय, क्या इस योजना के द्वारा ये विचार किया जा सकता है कि जो लोग अनधिकृत तौर पर बिजली से चोरी कर रहे हैं उन्हें अधिकृत किया जाए और उनसे बिल वसूल किया जाए, और क्या मुफ्त कनेक्शन के साथ मुफ्त बिजली भी प्रोवाइड करने का कोई प्रावधान है? अध्यक्ष महोदय, ये मुफ्त कनेक्शन के साथ मुफ्त बिजली प्रोवाइड करने का कोई भी प्रावधान नहीं है और ये मुफ्त कनेक्शन भी उन्हीं घरों को दिया जाना है सौभाग्य योजना के अंतर्गत। वैसे घर जो कि सौभाग्य योजना जिस समय स्वीकृत हुआ उस समय बने हुए थे, क्योंकि घरें तो निरंतर बनती रहती हैं, हर साल नए घर बनते हैं। तो हम लोगों ने यह तय किया था कि उस तारीख को, जिस तारीख को कि सौभाग्य योजना स्वीकृत हुई उस तारीख को जितने भी घर विद्यमान हैं उनको हम कनेक्शन दे देंगे। और जहाँ तक कि जो चोरी कर रहे हैं उनको कनेक्शन देने की बात है तो उनको कनेक्शन के लिए वो आगे तभी आएंगे जबकि उनकी चोरी बंद कर दी जाए। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का परामर्श हमने राज्यों को दिया था और ये रेड्स वगैरह करने का भी परामर्श दिया था। तो बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पर कि लोग पहले बिजली कनेक्शन नहीं लेना चाहते थे, बाद में इच्छुक हो गए जबकि चोरी देखे कि कठिन हो गई। श्री जुगल सिंह लोखंडवाला जी। धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगा कि जो लास्ट में छोरे पे जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे काफ़ी ऐसी दिक्कत रहती है, बिजली नहीं पहुँच पाती, तो क्या उसका सोलर या कोई और माध्यम है जहाँ बिजली पहुँचाने के लिए उनको आप दे सकते हैं? क्या किस तरह दे सकते हैं, मुझे जवाब देंगे माननीय मंत्री श्री? थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, जहाँ पर कि ये ग्रिड नहीं पहुँच पाया या पहुँचाने में ज़्यादा खर्चा होगा और घरों की संख्या कम है, वहाँ पर हम लोगों ने सोलर के माध्यम से कनेक्शन दिया और कुल जो हम लोगों ने 2,86,00,000 घरों को हमने कनेक्शन दिया। उसमें से ऑफ ग्रिड भी हम लोगों ने काफ़ी ये घरों को कनेक्शन दिया। कुल मिलाकर के हमको लगता है कि ऑफ ग्रिड भी कुछ हम लोग 4,16,469 घरों को हम लोगों ने ऑफ ग्रिड माध्यम से यानी कि स्टैंड अलोन सोलर सिस्टम से हम लोगों ने कनेक्शन दिया और सभी राज्यों से हमने सर्टिफिकेट लिया कि उनके सभी घर विद्युतीकृत हो गए। आइए सर्टिफिकेट हमारे पास है। डॉक्टर वी शिवदासन जी।
Dr. V. Sivasan. Question number 137. Mani. Acha, is there? Please. Sir, I interested to the next one, 137. No, you have put your 136. So ask your supplementary on this. Next one I am. You are not interested in asking on this. Mani Revati Raman Singh ji. I have written. You mistakenly written 136, that is. धन्यवाद उपसभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो आपने विद्युतीकरण कराया है, बहुत से गांव या घर छूट गए हैं जहां पर विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। तो क्या आप सर्वे करा के समयबद्ध तरीके से उन जगहों पर जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है उसको कराने की कृपा करेंगे? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हमने सभी, जैसे कि हमने बताया, हमने सभी राज्यों से सर्टिफिकेट लिया कि उनके हर घर कनेक्ट हो गए कि नहीं, क्योंकि हमारा मकसद यही था कि हर घर कनेक्ट हो जाए। और माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश से हमें 31 दिसंबर 2018 को सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया कि उनके हर घर कनेक्ट हो गए। उसके बाद फिर बाद में उन्होंने कहा, तो उस समय उन्होंने कनेक्शन दिया था 79,80,568 घरों को। उसके बाद पुनः उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्र भेजा कि करीब 12 लाख घर बच गए हैं, 12-13 लाख घर बच गए हैं, तो उनको और कनेक्शन देना है। उसको भी हमने स्वीकृत कर दिया दूसरी बार, तो उसको भी कनेक्शन दिया गया। और उसके बाद पुनः यो कनेक्शन हो गया। उसके बाद पुनः उत्तर प्रदेश ने पुनः पत्र भेजा कि हमारे 13,07,021 घर अभी भी छूट गए हैं, जिनको नहीं, हमारे 3,34,652 घर अभी भी छूट गए हैं, उनको कनेक्शन देने की अनुमति दी जाए। तो फिर उसको भी हमने सैंक्शन कर दिया। तो जो, और इसके बाद फिर ये अब ये अंतिम है, क्योंकि 31 मार्च को हमारा योजना समाप्त हो जाएगा, तो हमने टाइम दिया। ये सैंक्शन हमने किया 13 जुलाई 2021 को, और 31 मार्च को ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम फंडिंग नहीं दे पाएंगे, ये भी राज्य सरकार को हमने बता दिया। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 137, माननीय वाईएस चौधरी जी। माननीय मंत्री, फर्स्ट सप्लीमेंट्री प्लीज। Sir, the GST compensation for the years 2021 and for the current year 21-22 yet to be paid to various states, while the GST collection is showing upward trend. Particularly in the state of Andhra Pradesh, even reply says that about 1,524 crores are yet to be released. So my question to, supplementary question to the Honorable Minister is, by when the amount will be transferred? माननीय मंत्री जी। जनवरी और 22 तक की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश को 1524 करोड़ रुपए और तेलंगाना को 308 करोड़ रुपए की जीएसटी क्षतिपूर्ति अभी जारी की जानी बाकी है। कुल मिलाकर सभी राज्यों का यूटी का 53,661 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति अभी जारी की जानी है, जिसे देने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसको बहुत जल्द भुगतान कर देगी। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, I am glad that Minister generally have been committed to support all these states about the GST compensation. But in general, particularly because of the pandemic, there is every state have been trailing behind about their recovery and collection. So, is there any proposal from central government that the GST compensation may be extended for another 5 years, though originally committed only for 5 years? माननीय मंत्री। सभापति महोदय, जीएसटी एक्ट 2017 की धारा 8 के तहत जीएसटी की क्षतिपूर्ति उपकर भारत के लोक लेखा पब्लिक अकाउंट्स का हिस्सा है।
जीएसटी लागू होने के लिए राज्यों को जीएसटी अधिनियम की धारा 10(2) के अनुसार केवल 5 वर्षों के लिए ही क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। हमारी सरकार राज्यों को 2022 का कंपनसेशन देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। कोविड काल में कम जीएसटी कलेक्शन, शेष कलेक्शन कम होने के नाते जो प्रदेशों पर संकट पड़ी थी, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। कुछ समय भी हमने लोन लेकर के क्रमशः 1,10,000 करोड़, 1,69,000 करोड़, 2,70,000 करोड़ रुपया लेकर के कहीं ना कहीं लोन के रूप में उस सरकारों की मदद करने का काम किया है। माननीय वंदना चौहान जी। The state of Maharashtra generates the highest revenue to the kitty of our country. However, in this table which has been appended as annexure to the reply, we see that the maximum figure which seeks compensation yet to be released is for the state of Maharashtra, which is a whopping 11,563 crores. Sir, and another observation that the states of Andhra Pradesh, Delhi, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal, all non-BJP states have this kind of a figure. So what is the प्रयोजन क्या है मिनिस्ट्री का कि ये क्यों हो रहा है and why isn't this 11,500 not released? Thank you, sir. माननीय मंत्री। सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा कि भारत सरकार 2022 तक प्रतिपूर्ति देने के लिए कटिबद्ध है और निश्चित तौर से महाराष्ट्र का भी जो बकाया है उसको भी देने का काम करें। माननीय भुवनेश्वर कलिता जी। प्लीज माननीय भुवनेश्वर कलिता जी। Honorable FM wants to reply, please. Senior member Vandana Chavan has raised this question. Unfortunately, I've sought your permission to say that the council is a body which decides on how this works out, how the disbursements happen. There is a given formula which has been in place since the time GST has been implemented. And even the way in which the back-to-back loan has been taken and distributed by the center but through the public account is also something which the GST Council has deliberated in not just one but 3 council meetings. It's very well to point out that Maharashtra has a very big amount due. But the 2 other columns will also say that in the distribution as well, the share of Maharashtra has, as per the formula, no discretion, been fairly higher compared to the other states. I humbly submit an appeal through you that for a body like GST Council, in which every finance minister from every state sits in and takes a call, it's a collective decision of the GST Council, and I appeal through you that we don't need to politicize this. No individual has the right to tweak the formulation, and therefore there's no differentiation made on the basis of this party or that party. It's an insult to the GST Council, which is a federal body in which every state has its own finance minister sitting and deliberating. So I would humbly appeal through you, sir, that we do not politicize this distribution. Thank you. माननीय भुवनेश्वर कलिता जी, प्लीज। माननीय भुवनेश्वर कलिता जी, प्लीज सीट पर बैठ करना बोले, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है। Sir, again, sir. Areas is there given by state. There is no differentiation and it goes per the formula given. Please, सीट पर बैठ करना बोले, please. And the areas are there. माननीय प्लीज सीट पर बैठ करना बोले, माननीय प्लीज। The money paid is माननीय also मंत्री जी higher का for बयान the रिकॉर्ड पे state, जाए, sir. प्लीज। The amount given for 22, amount given for 21-22, all this is determined per a formula, and the amount paid also as back-to-back for these states which have been named by honourable member is higher than the other states. Would they want to recognize that? Thank you. माननीय भुवनेश्वर कलिता जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Honorable Minister has mentioned about that the GST Council is constituted of all the states, and I want to, and from time to time it holds its meeting, and I want to refer to one meeting, the 43rd GST Council meeting,
whether it is a fact that council, the group of ministers has taken decision on capacity-based taxation and special composition scheme in certain sectors in GST constituted before 43rd GST Council meeting to examine the possibility to levy of GST based on the capacity manufacturing unit and special composition schemes. Please be brief in your question. Please be brief. Prone sector. Put your question. That is my question. Please. That is my question, sir. Thank I want to know from the minister. Please. निश्चित तौर से सरकार ने बहुत सी कदम उठाए कि जिससे जीएसटी कलेक्शन का बढ़ोतरी हो। हमारी सरकार जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाने के हर संभव प्रयास कर रही है, जिसमें प्रमुख है कि कर अनुपालन कंप्लायंस में सुधार के लिए जीएसटी दरों को सरल करना, ई चालान सिस्टम लाना, अनिवार्य ई फाइलिंग करना, करों के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा, लेट भुगतान पर जुर्माना का प्रावधान, वेरिफिकेशन के लिए थर्ड पार्टी सोर्सेज का उपयोग, टैक्स पेयर को शिक्षित करना और मीडिया अभियान चला करके इसके अतिरिक्त ट्रांजिट में वस्तुओं की आकस्मिक जांच के लिए ई-वे बिल स्क्वाड के लिए सक्रिय भी किया जाता है ताकि टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो पाए। माननीय जवाहर सरकार जी, प्लीज नो, माननीय जवाहर सरकार जी, प्लीज 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 प्लीज, माननीय जवाहर सरकार जी। Sir, thank you. I would like to ask the Honourable Minister, whoever to this reply, that you have mentioned that the compensation cess will go on beyond 5 years. Now, we have been demanding this for a long time. We'd like to know more specifically how many years would you like? Thank you. Thank you. And the one about everything... Thank you. You have put your one question. Jawahar, please. क्षतिपूर्ति पे उपकर का निर्णय जीएसटी काउंसिल ने लिया है और निश्चित तौर से जीएसटी काउंसिल में निर्णय हुआ कि 2022 से 5 साल के लिए 27 तक उपकर लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 माननीय श्री KRN राजेश कुमार, अच्छा प्लीज, माननीय मंत्री जी प्लीज पुट योर फर्स्ट सप्लीमेंट्री मिस्टर राजेश कुमार। Honorable respected Deputy Chairman sir, Kollimalai Hills, Namakkal district, Tamil Nadu is one of the most traditional place for cultivation of the medicinal plant and a lot of historical reference are there for the same. We have product the medicinal plant in Kollimalai Hills. As per Honorable Minister has replied at present, one Siddha medicinal plant garden in functioning in Mettur in Tamil Nadu under the Central Council for Research in Siddha since 2004. It is engaged in the maintenance of and development of herbal garden and the cultivation of medicinal plant. It is suited at around 125 kilometers away from Kollimalai Hills. In the Honorable Minister reply, he said there is no such proposal to set up the Siddha Medical Research Center. But I am requesting the Minister to consider setting up of a Siddha Medicinal Plant Garden Extension Center in Kollimalai Hills from the Mettur Please be brief. Because there are much more medicinal plants in Kollimalai Hills. The district administration and the state government are ready to provide land to setting up the extension center. Will the Minister of Ayush reconsider the establishing FBMG Kollimalai Hills? Please be specific in your questions. Please. Honorable Minister. Respected Deputy Chairman, sir. Honorable member has rightly raised this important issue before this august house. Kollimalai Hills in Tamil Nadu is famous for exotic medicinal plant. And these medicinal plants are collected to develop Siddha medicine. So, considering the potentialities, Ministry of Ayush, Government of India has already taken a lot of initiative by setting up of the institution like Central Council for Research in Siddha, functioning in Tamil Nadu, and with 3 peripheral institutes, Siddha Central Research Institute, Chennai,
Siddha Clinical Research Unit, Government of Siddha Medical College Campus, Palayam, Kottai, and Siddha Medical Plant Garden, Mettur Dam, Tamil Nadu. A National Institute of Siddha under the Ministry of Ayush is also situated in Chennai. So all these institutions are day and night working with commitment and sensibility with the support of the people of Tamil Nadu. I must mention the initiative taken by the government of Tamil Nadu is very, very praiseworthy. During the COVID-19 pandemic, they have distributed 1 crore 80 lakhs Kabasura Kudiner, which is based on the Siddha system of medicine among the people of Tamil Nadu, and which has given a lot of relief from this pandemic situation to the citizen. So, considering your expectation, I can simply tell you that I am also interested to pay a visit to these hills, beautiful hills. Thank you. To that extent, I can make you promise. Thank you. Second supplementary. Mani Rajesh, Sir. be brief in your question. Please. Okay. The Honorable Deputy Chairman, sir. Please be I brief. want direct answer. Others will get the opportunity also. Please. Okay, sir. I want direct answer. I kindly request to the Honorable Minister, one extension center in Kollimalai Hills for the Siddha medical plant. Thank you. Then, what the, and next You have already second put your question. supplementary question, what is the total allocation made to the Central Council for the research in Siddha for Siddha plant cultivation during the last 3 years? Whether the CCRS has utilized the allocation fully? Thank you. If not, the reason therefore. Thank you. Thank you, Rajesh. Sir, the Ministry of Ayush is trying to develop all system of medicine that is involved in the Ayush family. So, regarding the support, we have been extending our support as per the proposal sent by the respective institution. And in this regard, as you know, that all system of Ayush now will be taken as center stage in the global scenario. You have all come to know WHO has decided to set up a global center for traditional medicine. And that is why now all the system will move together to establish its strength with all scientific evidences and ability before the eyes of the globe, before the people of the globe. So now, as WHO has set up, this is the first and only institution in the country, that is Global Center for Traditional Medicine. Now this is an opportunity for the people of the country who have been there in this particular system for decades together, and this will definitely empower our traditional practitioner to demonstrate their ability before the global society. Thank you. Thank you. Mani Dr. M. Thambi ji, today's birthday of Dr. M. Thambi ji. Many, many happy returns to Sri Honorable Thambi ji. We all wish you happy birthday. Thank you very जन्मदिन much. की बहुत शुभकामनाएं हम सब की ओर से. Deputy Chairman. Please put your question. And also other members can blessing me. With the blessings, I can serve more. Thank you. Please, very much. yes. Sir, just I want to know from our Honorable Minister, so you know very well that central government is extending a lot of efforts to develop the Ayush, especially in Tamil Nadu.
they are established 3 research centers on Siddha. But the same Siddha is the very famous and also very traditional thing, ancient thing, which has given a lot of relief for the people, Indian system. But now that is the standard is slowly going down, what I learned, sir. Therefore, I request the Honorable Minister, not only establishing 3 institutes like this research, let him have more centers like Kollimalai and other places. Then it will give very boost. Whether the Minister will come forward to establish more research centers on these Siddha systems. Honorable Sir, the Honorable Member has expressed his concern about the development of Siddha system of medicine in the country, and that is why he is asking more and more institutions to set up throughout the state of Tamil Nadu. For his information, so far 8 peripheral institutions throughout the country is now functioning. Like we have Siddha Central Research Institute, Chennai, then Siddha Regional Research Institute at Padusiri, Siddha Regional Research Institute in Thiruvananthapuram, Siddha Clinical Research Unit in Palai-Katai, Siddha Medicinal Plant Garden, Mettur, Siddha Clinical Research Unit, New Delhi, Siddha Clinical Research Unit, Bangalore, Siddha Clinical Research Institute, Tirupati. So this is the way. Gradually it is growing up, and I believe definitely considering the importance of this particular system of medicine, and out of this medicine, this particular system has proved its like particularly importance to the prevention of diseases and also preservation of human health. So that is why I am confident that whatever honorable member is expecting from us, this is the demanding situation, and I could particularly assure this house, you must appreciate. Please be brief in your answer. Please. You must appreciate why. Please. No, Please. listen to me. Listen to me, please. Please be Listen to brief. me. Listen to me. Honorable Minister, please be brief. So, and I want to be brief because the importance, how importance is growing up. This must be realized by the August House. All questions are important. Please let us move to other. Okay. Please. So that is why. Please. Sir. No. Please be brief. Honorable Minister. Honorable Minister, please be brief. Honorable Minister. So, please brief. I will move to other. Please. Sir, I could assure you. हाँ बोले आपकी बात Because this is definitely growing situation, and this particular matter will be definitely examined. Thank you. माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी. प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी. मैं जानता हूं ये ऑन नहीं हो रहा है. श्रीमान सिद्धा आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ही है, और आपको आश्चर्य होगा कि सरकारें इतनी उदासीन हैं इस मंत्रालय की तरफ, इन सारी पैथी जो इनकी तरफ. ये पूरे आयुष मंत्रालय का बजट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली से कम है. इतना भी नहीं होता है. तो प्रश्न ये उठता है कि इतने कम बजट के साथ न तो आप नई संस्थाएं खोल सकते हैं, और आपका मंत्रालय मांगता भी है तब भी बजट में वो पैसा दिया नहीं जाता है. तो कैसे आप रखाएंगे ये सारी मेडिसिनल, जो चाहे वो तमिलनाडु के हिल्स की हों, चाहे केरला में पाई जाती हों, चाहे उत्तराखंड में, ये स्मगल होकर देश से बाहर जा रही हैं. इनकी जानकारी है या नहीं मंत्री जी, वो बताएं. उनको रोकने के लिए क्या काम कर रहे हैं, और इन सारे मेडिसिनल प्लांट से जो दवाइयाँ बन सकती हैं उनके लिए आप क्या तौर तरीका अख्तियार करने जा रहे हैं. रेस्पेक्टेड सर, आपने जो कहा है मुझे लगता है ये सही नहीं है, क्योंकि आपको 2014 में नेशनल आयुष मिशन का बजट था 75 करोड़, अभी 550 करोड़ हो गए. तो इससे साफ जाहिर है
5 गुना बढ़ा दिया गया है। और 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको इंडिपेंडेंट मंत्रालय का स्टेटस दिया, अभी कैबिनेट मंत्रालय का स्टेटस दिया है। इससे साफ जाहिर है पिछली 7 साल के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है, जो इंपॉर्टेंस दी गई है, इसके वजह से दुनिया ने स्वीकार किया है कि हमारे ट्रेडिशनल जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा दुनिया के मानव समाज को राहत दे सकता है अलग अलग बीमारियों से। धन्यवाद। माननीय ब्रिजलाल जी, ये क्वेश्चन रिलेटेड है सिद्धा मेडिकल रिसर्च सेंटर एट कोल्लीमलाई, तमिलनाडु। क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है? नहीं सर। नहीं। माननीय तिरुचु शिवाजी। Conducted a survey of medicinal plants in Kolimala Hills and collected 20 rare medicinal plants from Kolimala Hills. And one of the questions, main question is that whether the government has any proposal for setting up a Siddha Medical Research Center in the Kolimala Hills. And it is said no such proposal. Sir, when there are 20 rare medicinal plants have been collected by the survey, why don't the minister consider of setting up a plant there? That's all. Our simple question. Sir, I am repeatedly saying that I am interested to visit, considering the availability of the medicinal plant in that particular famous hill. So I am definitely visiting. After that, definitely I will examine the whole issue. Thank you. Question number 139, माननीय सीमा द्विवेदी जी। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, जवाब सभा पटल पर रखा गया। पहला सप्लीमेंट्री सीमा जी। जी माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि जैसे सौर ऊर्जा, जैविक ऊर्जा अथवा इथेनॉल से बनने वाली ऊर्जा 3 ऊर्जा है, इसमें हम जानना चाहते हैं कि सरकार नीतिगत मामले में किस ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्राथमिकता से काम करेगी। सभापति महोदय, भारत सरकार तीनों ऊर्जाओं को महत्व बढ़ावा दे करके प्रधानमंत्री जी का रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर 2030 तक जो महत्वाकांक्षी टारगेट रखा गया है कि 500 गीगावाट के लिए, इसी के लिए हमारा मंत्रालय तीनों ऊर्जाओं का विभागों को उतना ही परिपूर्ण महत्व दे करके उसको बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें हम लोग सोलार के लिए पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री जी जो महत्वाकांक्षी 2022 तक 175 गीगावाट की जो लक्ष्य रखा गया था, हम लोग पूरा कर चुका है कि भारत सरकार आने वाला 2030 तक भी 500 गीगावाट की पूर्ण पूर्ति करेगी। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री। महोदय, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो सौर ऊर्जा के उपकरण आते हैं वो चाइना से मंगाया जाता है। मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि जो ये हमारा क्या चाइना से आयात करना बाध्यता है अथवा हम स्वदेशी उत्पाद करके अपने प्रदेश में रोजगार का बढ़ावा देंगे, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत की विचार को लेकर के सोलार एनर्जी के ऊपर हमारा मंत्रालय ने अभी आने वाले दिनों में 5 कंपोनेंट के लिए PLI स्कीम के जरिए हम लोग भारत के अंदर ही पैनल, सेल, बैटरी सारी चीज़ें यहाँ पर ही उत्पादन हो, इसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग PLI स्कीम ऑलरेडी ला चुके हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी कई देश के अंदर उद्योगपति ने उसको दिया है। आने वाले दिनों के अंदर जो जितना हो सका आत्मनिर्भर भारत के अंदर ही उसका उत्पादन हो, हमारा मंत्रालय उसके ऊपर जोर दिया है। धन्यवाद। माननीय P. भट्टाचार्य जी। Chairman said the Honorable Minister has said the setting up of ultra mega renewable energy park to provide land and transmission RE developers on a plug and place basis. So I would like to know, Honorable Minister, exactly what are the places you are going to set up this type of park? Would you kindly explain it to us? Has it been done in a particular state or in different states in the country? मान्य सदस्यों का जो चिंता है, हम लोग बहुत सारे स्टेट में
सोलर पार्क बनाने के लिए हम लोग इच्छुक भी है और वहाँ की सरकारों से जो भी वहाँ पर डिमांड करेगी तो हम लोग उसको मदद करने भी तैयार है। तो हर अलग अलग स्टेट के लिए उसको हम लोग आपको जवाब हम लिख के दे देंगे। माननीय टीजी वेंकटेश जी। Through you to Minister, sir, use of green energy will be successful only. Just to giving the incentives will not be successful, sir. Mostly the state governments also should support this this subject, sir. The incentives government of India is giving, but state governments, they are not adopting those things and they are creating a number of problems. Number of state governments, the energy wheeling charges, they are creating a problem. Again, captive units, they are getting a problem, and all the problems will go to the tribunal. Tribunal judges, Please be sorry to say, specific in your sir, question. tribunal Please. judges are sleeping. They are not giving the decisions. Decades they are taking. For that, government of India also. Please should ask a study question, that. Mr. Venkateshwar. My question is, sir, tribunals are delaying the judgments. Government of India should monitor that one and sort out the issues early. Chairman, sir. Two or three issues have been raised. I'll just add to the reply, and I'll reply to this. One is manufacturing in India, make in India. Now, apart from having a PLI scheme, incidentally, we already had a bid in the PLI scheme in which we finalized manufacturing here of about 8,500 megawatts. And this is the second PLI scheme which the Honorable Finance Minister had announced in her budget, 19,500 crores. For that also, we are going to come out with a bid. This is not the only step we are taking. We have also set up a tariff barrier. So now, import of modules from other countries, I will not name countries, will attract a customs duty of 40%. And cells will attract a customs duty of 20%. We already have some manufacturing capacity here, about 15,000 megawatts worth, and we want to scale it up. We want to emerge as an exporter of modules. So as far as Make in India is concerned, we've made some progress. We are going to make more progress. There was a question of solar parks. Now we have solar parks almost about 30,000 megawatts worth, which are already there working, and projects have also come up, and we are adding more solar parks. The problem which the honourable member just now raised is a problem which has been engaging us, and to sort out that problem, we are, we have had meetings with the Forum of Regulators. The Forum of Regulators is a meeting, is a conference of all the regulatory bodies in the country. All the state regulators come, and we have emphasized to them two or three things. Number one, that they should not set up unnecessary hurdles in the setting up of renewable energy, and that the pendencies in their courts must reduce. The pendencies must come down. This is what we have emphasized. And those regulators where there are large number of cases pending, we have pointed it out to them that a large number of cases are pending in your courts for so many months. We have a system of monitoring the pendency of cases with the regulators. But this is a problem which we are aware of. There is, the states also have an obligation. It's not only the central government. The states have an obligation because energy transition is something which is essential for the climate. We have made a pledge. Every country has made a pledge. Every developed country and developing country have made pledges to carry out energy transition to reduce their emissions. We've also made pledges, and that these pledges are national pledges, that we shall transition to renewables so that we reduce our emissions. Incidentally, up till now, we have been successful. In fact, we had pledged in COP21 in Paris that by 2030, 40% of our energy power generation capacity will come from non-fossil fuels. Now, we achieved that target in November 21, 9 years in advance. Our rate of growth of renewable energy capacity is the fastest in the world, and it will continue to be the fastest in the world. So, we shall, of course, as my colleague said, we shall reach that 500 gigawatts of target. These hurdles are there, the regulatory hurdles, we will overcome them. Thank you. Mani V. Vijay Sai Reddy.
the job creation potentiality of capacity, per installed capacity in case of usage of renewable energy technology is 25 times higher than the fossil fuel technology. So I would like to know from the Honorable Minister what steps the Government of India is taking for penetration of renewable energy projects into rural areas, and how much employment has been generated for the last 4 or 5 years as a result as a result thereof. Thank you very much, sir. अध्यक्ष महोदय, सोलर एनर्जी के अंदर हम लोग 3 कंपोनेंट के अंदर हम लोग जॉब देने का भी करते हैं। एक तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए से हम लोग क्वालिफाइड और ट्रेन मैन पावर भी हम लोग करते हैं, और उसी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर फरवरी 2022 तक 62,348 लोगों को हम लोग ने ट्रेन किया है। और नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी फेलोशिप स्कीम के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी लाइक एमटेक और पीएचडी के लिए टॉप 100 NIRF के रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर भी हम लोग काम करते हैं। और नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी साइंस फेलोशिप के अंदर भी हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं। तो सूर्य मित्र के अंदर हमारा सोलर जो एनर्जी है उसी के अंदर हम लोग 2022 तक 50,806 विद्यार्थियों को हम लोग ट्रेन किया है। उसी के अंदर 53% ऑलरेडी हम लोग एम्प्लॉय करके पे रोल के ऊपर हमको उसका इन्फॉर्मेशन दिया है। और ऐसे ही वरुण मित्र के अंदर भी हम लोग जो सोलर वाटर पंप टेक्नीशियन भी हम लोग उसको ट्रेनिंग करते हैं, और वायु मित्र करके हम लोग विंड एनर्जी टेक्नीशियन के लिए भी करते हैं। तो करीब सोलर मैन्युफैक्चर के अंदर मॉड्यूल और कैपेसिटी एज ऑन डेट 11,500 मेगावाट, जॉब पर ईयर पर मेगावाट के लिए 2.6 के हिसाब से हम लोग करते हैं। तो एनुअल जॉब पर ईयर के लिए 29,900 लोगों को जॉब मिलती है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 140 माननीय सुखराम सिंह यादव जी। 140 माननीय मंत्री जी। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय चौधरी साहब जी। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है उसके बारे में जो तारीखें दी गई हैं उनका अध्ययन एक बार आप भी कर लें। इतना विलंब किन कारणों से किया गया, इतनी बड़ी धोखाधड़ी और 4-5 साल लग जाए जांच में, इसका क्या कारण था, और जिन लोगों ने इसकी जांच में लापरवाही की है उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्यगण, हमारे सभागृह में वरिष्ठ सदस्य माननीय सुखराम सिंह यादव जी ने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, जिसके बारे में कुछ अखबार में भी न्यूज़ आई थी। इसी में ABG शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के बारे में है। इस कंपनी को 24 बैंक ने लोन दिया था। इस 24 बैंक में से 10 पब्लिक सेक्टर बैंक थी, 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक थी और 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, 2 फॉरेन बैंक्स थी, 2 बैंक लीडिंग थी। टोटल जो लोन था 14,349 करोड़ था, और इसी में लीड बैंक ICICI बैंक थी। अभी मैं थोड़ा 1 मिनट बताना चाहता हूँ सर। इसमें मैं बताना चाहता हूँ द लोन गिवन टू दिस कंपनी was between 2005 and 2006 1547 करोड़ लोन दिया था। उसी वक्त UPA गवर्नमेंट थी। उसी के बाद 2006 से 2014 8 बार से ज़्यादा लोन दिया गया, 11,800 करोड़ लोन दिया गया। उसी के टाइम भी UPA गवर्नमेंट थी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोन देने के बाद ये टोटल एक्सपोजर वाज 16,397.57 करोड़, और इसी को बाद इस लोन को कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग करा गया। ये जब से इतना ये कर दिया, उसी इसका जो डेट है तो उसी टाइम भी UPA गवर्नमेंट थी।
the total amount this was declared as a NPA account on 1st August 2013 by the Canara Bank. That is also in the time of the UPA government. The CDR also was given in the UPA government. मैं बताना चाहता हूँ delay क्यों हो गया? तो declaration was only declaration. All these things were given in the UPA government. इसी के बाद जब ये होगा तो इसका forensic audit करना पड़ा. Forensic audit हो गया. Forensic audit होने के बाद जो forensic audit के ऊपर Mr. John Bretas, no, please. इसमें जॉइंट लेडेड बैंक जॉइंट बोर्ड के SBI के तरफ से कंप्लेन लॉन्च किया गया. SBI ने CBI को कंप्लेन लॉन्च किया और CBI ने कंप्लेन लॉन्च करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन चलते गए तो इसी में एक रूल है सर, अगर ये हर एक केस को स्टेट में जाना पड़ता है, उनको परमिशन लेना पड़ता है. वी हैव टू वेरिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंप्लेंट्स, cross examination of the accused complaint and other related parties, verification of huge pile up documents, gathering of information documents, scrutiny of the information, checking of the huge trial and transactions including foreign currency and verification of visit. इतना ही नहीं तो स्टेट्स ने, मैं बताना चाहता हूँ, हर एक स्टेट से परमिशन लेना पड़ा और वहाँ से आपने को स्टेट को टाइम लगा. मानिए लो प्लीज आप बैठ करके बीच में ना बोले. मानिए लो प्लीज. यस बोले. मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये प्रश्न का उत्तर देने के बजाय यूपीए सरकार में कितने लोन दिए, हम कितने, मेरे पास भी बैंक का लिस्ट पढ़ते जाऊं क्या मैं? मेरे पास भी 20-25 बैंक का लिस्ट है कौन कितने कितने दिए. लेकिन क्वेश्चन ये है, अगर इसको शिपयार्ड का पूरा डिस्कशन करना है इस सदन में, हम करने को तैयार है, उसके लिए नोटिस भी दिए हैं, देंगे. लेकिन ये रेफरेंस जो क्वेश्चन एक है, उत्तर दूसरी देकर कि पेपर में आना कल के दिन कि यूपीए गवर्नमेंट में ये हुआ, यूपीए गवर्नमेंट में वो. धन्यवाद माननीय लोपी, धन्यवाद. नहीं प्लीज फिर अगर यूपीए गवर्नमेंट में ही वही दिया है, सप्लीमेंट्री क्यों करें? मिस्टर चौधरी 3 सेकंड सप्लीमेंट्री. आपका सेकंड सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड पे जाएगा. प्लीज सेकंड सप्लीमेंट्री. सरकार किसकी है किसकी नहीं है, जो भी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है. मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूँगा कि जब एक छोटा किसान छोटा लोन लेता है, उसको आप थोड़े समय में आपको हाउस बंद कर देते हो तहसील में, लेकिन इतने बड़े लोन लेने वाले लोगों के खिलाफ 25,000 करोड़ रुपया जिन्होंने लोन लिया और इसके बाद भी कार्रवाई में इतना विलंब क्यों हुआ? और मैं जानना चाहूँगा अभी तक कितने लोग जेल में गए और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई. धन्यवाद चौधरी साहब. और बस काफी हो गया. धन्यवाद. हो गया, आपने क्वेश्चन पूछ लिया. आप ब्रीफली आंसर दें. माननीय मंत्री जी ब्रीफली आंसर प्लीज. FIR was registered by CBI against 8 people. अगर मैं चाहे तो नाम बताना चाहूँ. नहीं आप ब्रीफली आंसर. तो 8 लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च किया है, उन्हीं को आउटलुक नोटिस दिया है और उनके ऊपर कार्रवाई CBI की तरफ से चल रही है. माननीय नीरज डांगी जी. सर, आपके माध्यम से आई वुड लाइक टू आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फ्रॉम टू द ऑनरेबल मिनिस्टर. व्हाट स्टेप्स इज द गवर्नमेंट टेकिंग टू रिफॉर्म lending policies so that similar fraudulent loans do not occur in the future? Thank you. क्वेश्चन रिपीट करिए सर. ये क्या रिपीट सर? आपने क्या स्टेप्स, आपने प्लीज आप बीच में ना बोले. आपने क्या स्टेप्स लिए ताकि फ्यूचर में ऐसी चीजें ना हो? दिस इज क्वेश्चन प्लीज. Online researching database frauds responsible for banks in the form of Central Fraud Registry has been set up. Similarly, banks to report frauds beyond the threshold amount of the police immediately. Then fraud risk and for early detection, a loan fraud prompt action taking
initiation of staff absolutely trained by the RBIs, as well as the institution of comprehensive automated early warning system in public sector's bank is required. माननीय प्रियंका जी. That you've given me a chance to ask a supplementary question on this specific question. सर, हमें तो बचपन से सिखाया गया था गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है और साथ ही साथ फ्रॉड देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है. सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि किसी ने राज्य सरकार के बारे में मुद्दा उठाया था. देश का सबसे बड़ा फ्रॉड 2019. हाँ, थोड़ा तो हंसी मजाक कर लिए, सब गुस्से में नहीं रह सकते. सर, 2019 में फ्रॉड डिक्लेयर किया गया था. अप्रैल 2019 में इसको फ्रॉड बताया गया था और मैं साहब को बता दूं आपके माध्यम से सर मिनिस्टर को कि ये ICICI बैंक लेड कंसोर्टियम था जिन्होंने ये लोन दिए थे. ये कोई पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं था. 2019 में ये फ्रॉड डिक्लेयर होता है. CBI इन्वेस्टिगेशन के लिए SBI 8 नवंबर 2019 की मांग करती है, पर फर्स्ट FIR जो लॉन्च होता है 7 फरवरी 2022 को होता है. इतना विलंब क्यों हुआ और क्या इस कारण ये है कि गुजरात गवर्नमेंट उनको संरक्षण दे रही थी? थैंक यू. नो कमेंट. थैंक यू. बस ये मेरा सवाल है. This is a wrong question asked by the honorable member. कोई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा नहीं है. CBI इंक्वायरी की जांच कर रहे थे. मैं जैसे पहले ही बता दिया कि CBI को हर स्टेट में जाके हमारे मोदी साहब ने जैसे बताए थे कि स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है जो पुलिस को जाके, तो इसीलिए वो डिले हो चुका है. और तो CBI ने जैसा ये हो गया तो फ्रॉड डिक्लेयर करे और एक्शन लिया है. माननीय सुशील कुमार मोदी. ओह प्लीज मैडम, एक साथ उत्तर दे. मोदी जी प्लीज. मेरा भी उत्तर इस पे मिलता जुलता है. एक साथ उत्तर दे. एक मिनट, आप पहले माननीय मंत्री को बोल रहे हैं. प्लीज. मैं जो बोल रहा हूँ उसी को. One or two clarifications, sir, for the question asked by the honourable member. Public sector banks are also involved in this. ICICI may have been the lead bank of the consortium, but clearly there are 10 public sector banks in this. One. Sir, and then there was a forensic audit report which was done by, which was received by the SBI, that was done by a audit firm called Ernst & Young, and that was submitted in January 2019. Then I'm sure all honorable members are fairly familiar. Banks have an institutional way of going through assessing a forensic audit report. That fraud identification committee, as it is called in SBI, took 5 months over it, and I wouldn't want to say that it was delayed there at that point. 19th January, 5 months later, on 19th of June 2019, they recognized it as fraud. That is SBI's own team. Huh? 6 months. Please, please. Mr. John Britas, please. No, please let her speak, please. I just want, no, here there is, please. No, you're confusing Don't be everybody. I'm sorry, if you only listen, you wouldn't do that. First, 19th January 2019, 19/6/2019. Within 5 months, they have recognized, based on the forensic report given by Ernst & Young, that it is fraud, and SBI has given the whole detail to CBI on 8/11/2019. So again, within 4 months, they have gone to CBI to say file the case. So SBI has been moving January to June to November within 2019 to make sure that the case is handled, and after that, SBI's case has been pursued from 8/11/2019. Yes, earlier, between 2014, when the last 42.6% increase is being given to an organization which is going through corporate debt restructuring. If you wouldn't mind, honorable members would please accommodate
that the MOS was only trying to say that 1 year to another year to third year to fourth year. Till 2014, 8 times, if the restructuring happens, and every time there's also an enhancement of money being given. He only has tried to highlight the fact that between 2005-06 till early 2014, periodically increasing the amount is happening, and to the extent that the last one which happens early March 2014, 42.6% increase has been given by the banks. Now, I'll move from this to one other related question which was asked. What are we doing about such things not getting repeated? Chaudhary Sahab probably asked that question. Simple, sir. There has, in this particular case, there's not been one credit enhancement after 14, when 8 times money has been given for a company which is under restructuring. That itself is the biggest fraud perpetrated, and unfortunately, I'm with my MOS to say prior to 2014. Thank you. माननीय सुशील कुमार मोदी जी. माननीय सुशील कुमार मोदी जी. सती महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि you have mentioned in your reply, madam, you have mentioned in your reply that the final complaint was filed on 14/12/2020. मैं फिर से 14/12/2020 को फाइनल कंप्लेंट एसबीआई ने फाइल किया, तो सीबीआई को 14 महीना क्यों लगा एफआईआर दर्ज करने में? क्या ये बात सही है कि कुछ राज्य सरकारों ने जिन्होंने कंसेंट विड्रॉ कर लिया था, उन्होंने कंसेंट विड्रॉल के कारण उन राज्य सरकारों ने कंसेंट देने में देर की और इसके कारण एफआईआर दर्ज करने में और 14 महीना लगा? तो मैं जानना चाहता हूं कौन कौन सी राज्य सरकारें हैं जिन लोगों ने कंसेंट देने में देर की और जिसके कारण ये लॉन्च करने में समय लगा? जो है कम समय है, ब्रीफली आंसर. समझे? माननीय उपसभापति महोदय, मैं आंसर देते समय बोला हूं कि जब सीबीआई इंक्वायरी होती थी तब कुछ राज्यों ने जो उनके इंक्वायरी करना पड़ता है तो वहां जाके रिफ्यूज किया है, तो उसने उनसे कंसेंट देने का विड्रॉ किया था पावर. तो इस टाइम सीबीआई को हर राज्य में जाके परमिशन लेना पड़ा और उसी में डिले हो गया. दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर डिलेइंग द इंक्वायरी. नंबर 1 तो महाराष्ट्र नंबर 1 राज्य है, और महाराष्ट्र राज्य है, और 2-3 राज्य है, मैं बताऊंगा. क्वेश्चन नंबर 141. माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन इज नॉट देयर. माननीय MM अब्दुल्ला जी. माननीय MM अब्दुल्ला, प्लीज. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. I would like to know whether Union Government has a policy to address the shortage of ambulances. Whether the Union Government works on a time limit. What is the time before which an ambulance has to reach patients and decide the number based on the time this time? Thank you, sir. आदरणीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य की विभाग से इमरजेंसी सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया है. और मुझे खुशी इस बात की है कि 2018-19 में जब 1100 करोड़ का एम्बुलेंस के लिए प्रावधान था, वो आज बढ़कर लगभग 2400 करोड़ हो गया है. तो मुझे लगता है ये एक दुगना बजट है जो एम्बुलेंस सर्विस सेवा को दे रहा है. सर, इसके माध्यम से मैं यही कहूँगी कि एक तो एडवांस लाइफ सपोर्ट है जो कि ALS एम्बुलेंस सर्विस है जो इमरजेंसी पेशेंट को टैकल करती है, जो विथ वेंटिलेटरी सपोर्ट, विथ कार्डियक मॉनिटरिंग एंड विथ 1 इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जिसमें रहते हैं. वो लगभग आज देखा जाए तो 12,000 है. BLS जो कि बेसिक लाइफ सपोर्ट है, वो बेसिक मॉडल फॉर इमरजेंसी, लेकिन उसमें वेंटिलेटरी सपोर्ट नहीं रहता है. सर, मैं कहना चाहूँगी कि ये स्टेट ने सर
सर Please. आप सुनिए, Please. आदरणीय उपसभापति महोदय, अगर राज्य सरकारों ने डिमांड की है पीआईपी के थ्रू तो उस पीआईपी के माध्यम से केंद्र सरकार ने लगातार वो बजट दिया भी है, वो Question hour is over. Please. Question hour is over. House stands adjourned to meet at 2 p.m.